Hello everyone. Once again, welcome back to my channel Study with Alka. I am your teacher Alka, and today in this video I'll be discussing the history of English literature. Yes, the history of English literature is a very important topic for the students of English literature. Be it for one who is aspiring for UGC NET exams or anyone who is doing MA in English, even for the students who are preparing for their teaching competitive exams, that is TGT, PGT exams under UP or any other states, be it under BPSC TRE, right? BPSC TRE अभी बहुत ही सारी वैकेंसीज निकाल रहे हैं बिहार गवर्नमेंट फॉर टीचर्स, एंड अगर उसके लिए कोई इंग्लिश की तैयारी कर रहा है तो इंग्लिश लिटरेचर एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एंड इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के लिए हमें इंग्लिश की हिस्ट्री, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री जाननी बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम उसी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स बिगिन। History of England before Anglo-Saxons. So, the land that we today know as England was originally inhabited by the tribes Celts. Actually, learners, उस टाइम यूरोप में कोई डिफाइंड बॉर्डर्स नहीं होते थे। बहुत सारे छोटे छोटे कबीले अपनी अपनी जगह पर इन्वेजन करके रहते थे। उसी में से एक कबीला, एक ट्राइबल ग्रुप था केल्ट्स का, एंड केल्ट्स जो आज का इंग्लैंड है उस लैंड पर एग्जिस्ट करते थे। काफी टाइम से वो रह रहे थे, एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। केल्ट्स वहां पे राज कर रहे थे। उनके साथ साथ कुछ और भी ट्राइबल ग्रुप्स थे, जैसे गेल्स थे एंड ब्राइथन्स थे, वो भी वहां रह रहे थे। और ये सभी कॉमन ब्रिटोनिक लैंग्वेज यूज करते थे। केल्ट्स जो डायलेक्ट यूज करते थे उसे केल्टिक डायलेक्ट या केल्टिक लैंग्वेज कहते हैं। गेल्स के द्वारा गेलिक लैंग्वेज यूज होता था। बट जो चीज जाननी है वो ये है आपके लिए कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंग्लैंड कौन थे, तो केल्ट्स थे। उनके साथ और भी छोटे छोटे ट्राइब्स जैसे गेल्स और ब्राइटन्स एग्जिस्ट करते थे। ओके, वो वहां बड़े आराम से रह रहे थे। बट देन रोमन एम्पायर केम इनटू द पिक्चर। सो केल्ट्स वहां पर, दैट इज टुडेज इंग्लैंड का जो लैंड था, वहां पर बड़े आराम से रह रहे थे। बट देन व्हाट हैपेंड? The Roman Empire, which was considered as one of the most powerful empire of the world during that time period, attacked England, that is that Celtic land, for the very first time. रोम ने पहली बार उस लैंड को, जो कि आज का इंग्लैंड है, दैट इज द केल्टिक लैंड को अटैक किया था समवेयर अराउंड 55 BCE अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग जूलियस सीजर। किंग जूलियस सीजर के लीडरशिप में पहली बार रोमन एम्पायर ने, रोम ने अटैक किया इंग्लैंड को। ओके, नाउ दे केप्ट अटैकिंग इंग्लैंड मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल अटैक्स किए, एंड फाइनली समवेयर इन 43 CE रोम कैप्चर्ड इंग्लैंड कंप्लीटली अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग क्लॉडियस। ठीक है, किंग क्लॉडियस की लीडरशिप में फाइनली 43 CE के अराउंड रोम ने कंप्लीटली इंग्लैंड के उस लैंड को, दैट इज उस केल्टिक लैंड को कैप्चर कर लिया। अब 43 CE से लेकर 410 सेंचुरी तक, 410 CE तक वो लोग बड़े आराम से, दैट इज द रोमन एम्पायर इन्वेडेड इंग्लैंड एंड सेटल्ड देयर टिल 410 CE। अब क्योंकि वो वहां रह रहे थे तो उस लैंड को अपने लैंड की तरफ प्रोटेक्ट कर रहे थे। दे अप्लाइड देयर ओन मिलिट्री फोर्सेस, अपना प्रोटेक्शन दिया। रोमन मिलिट्री फोर्सेस प्रोटेक्ट कर रही थी उस केल्टिक लैंड को। 410 तक बड़े आराम से बहुत सारे डिफरेंट किंग्स आए क्लॉडियस के बाद भी। तो पहला अटैक रोम ने इंग्लैंड पे कब किया? अराउंड 55 BCE में जूलियस सीजर के अंडर, एंड देन 43 CE के अराउंड किंग क्लॉडियस की लीडरशिप में रोम ने कंप्लीटली उस केल्टिक लैंड को कैप्चर कर लिया, एंड देन दे स्टार्टेड लिविंग देयर। बट नाउ व्हाट हैपेंड इन 410 CE में रोम जो कि रोमन एम्पायर का अपना लैंड था, वहां पर अटैक्स शुरू हो गए। Visigoths were some Germanic tribes. They attacked Rome
in around 410. नाउ ऑब्वियसली जब रोमन अंपायर के खुद के लैंड पर अटैक हो रहा है तो दे विल ऑब्वियसली मूव फ्रॉम इंग्लैंड to Rome in order to protect their own land. Now the Roman Empire along with their army forces अपनी military के साथ they started leaving England somewhere around 410 में वो इंग्लैंड को छोड़कर जाने लगे in order to protect their own land that is the Rome. क्यों? क्योंकि रोम पर विसिगॉथ्स का अटैक हो गया था. ठीक है. Now when 410 में Rome left England, once again this land of Celts became weak and very prone to the attackers, right? अब क्योंकि obviously यहाँ पे कोई military force नहीं था, this Celtic land once again became prone to the attackers. अब वापस से यहाँ पे कुछ ट्राइब्स के, कुछ जर्मनिक ट्राइब्स का अटैक शुरू हो गया. पिक्स और स्कॉट्स, ये दो जर्मनिक ट्राइब्स थे जो लगातार अटैक कर रहे थे केल्टिक लैंड पे. अब पिक्स और स्कॉट्स से के अटैक से बचाने के लिए केल्ट्स ने किन्हें बुलाया? अनदर जर्मनिक ट्राइब्स को, दैट इज द एंगल्स, सैक्शंस एंड जूट्स. एंगल्स, Saxons and Jutes were the three Germanic tribes that entered England, that came to England in order to protect this land from the attacks of Picts and Scots. Now, हालांकि वो सेव करने आए थे, बट यहाँ की richness और यहाँ की diversity को देख के, यहाँ के heritage को देख के, वो that is Angles, Saxons and Jutes settled there, settled on that Celtic land, and this marks the arrival of Angles, Saxons and Jutes, and thus the creation of this world, this land that is England. So ये जो ब्राइथन्स का लैंड था, ये जो केल्स का लैंड था, ये जो गेल्स का लैंड था, ये एक्चुअली इंग्लैंड कैसे बना? क्योंकि ये now became the land of Angles. So I hope you are clear कि England नेम कहाँ से आया. England means the land of Angles. अब क्योंकि यहाँ पे Angles और Saxons रहने लगे, वो रूल करने लगे, तो Anglo-Saxon age of English history began, and this led to the formation of this Celtic Brythonic land into England. सो इंग्लैंड नेम कैसे आया? एंगल्स और सैक्शंस से. अब जूट्स भी थे, तो जूट्स को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? तो लर्नर्स, जूट्स बहुत ही कम अमाउंट में थे, ज्यादा अमाउंट में एंगल्स थे, सबसे ज्यादा अमाउंट में, और उसके बाद सैक्शंस थे. इसीलिए इस लैंड को लैंड ऑफ एंगल्स दैट इज इंग्लैंड कहा जाता है. ठीक है. नाउ 410 AD इज द एक्चुअल टाइम पीरियड दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एंग्लो-सैक्सन एज in the history, in the English history, okay? And यहाँ से शुरुआत होती है हमारे अपने लैंग्वेज की, that is English language की. This marks the beginning of English language, that is the oldest form of English language, Old English, जिसे हम Anglo-Saxon English भी कहते हैं. ये इंग्लैंड में कहां से आता है? तो एंगल्स और सैक्शंस अपने साथ लेकर आते हैं. ठीक है. इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, बट अभी के लिए आई होप यू आर क्लियर दैट ये जो ओरिजिनल लैंड ऑफ इंग्लैंड है, ये पहले केल्ट्स के द्वारा रूल किया जाता था, फिर केल्ट्स पे अटैक किया रोमन्स ने, फिर रोम पर जब विसिगॉथ्स का अटैक आया तो रोमन्स लेफ्ट इंग्लैंड, and now this land once again became prone to attackers, Picts and Scots attacking them, and to protect them from the attacks of Picts and Scots, another Germanic tribe, that is Angles, Saxons and Jutes, came to England to protect them and finally settled there, and that is how this land of Celts became the land of Angles, England. Okay, so I hope you are clear how actually Anglo-Saxon age of English history began. So 410 AD marks the arrival of Anglo-Saxons and the beginning of Anglo-Saxon age. ठीक है. अब 410 से Anglo-Saxons, that is Angles, Saxons और Jutes यहाँ पर रहने लगे, और ये भी पेगन रिलीजन ही फॉलो करते थे. इनके लिटरेचर में हमें पेगन और क्रिश्चियनिटी दोनों का मिक्सचर देखने को मिलता है. ठीक है. बट 410 से लेकर 1066 तक तो ये बड़े आराम से रहे.
फिर 1066 में another historical event होता है, that is William the Conqueror from Normandy, which is in France, attacked England, and then Norman invasion happens in England, and then Anglo-Saxon से हमारा transition होता है Anglo-Normans में, क्योंकि Normans का rule that is 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग्स होता है, जहां पे विलियम द कॉन्करर इंग्लैंड को, इस लैंड को कैप्चर कर लेते हैं, कॉन्कर कर लेते हैं, ठीक है। किंग ऑफ नॉर्मैंडी थे, नॉर्मैंडी कहाँ है, फ्रांस में है। सो अब एंग्लो सैक्सन के बाद हमारा एंग्लो नॉर्मन्स, दैट इज बेसिकली फ्रांस का रूल इंग्लैंड में शुरू हो जाता है, जो कि सेकेंड फेज ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री है। एंग्लो नॉर्मन हम बाद में किसी और वीडियो में जानेंगे, बट आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ एंग्लो सैक्सन एज और एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत, इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंग्लो सैक्सन लिटरेचर के बारे में बताऊंगी। सो आई होप यू आर क्लियर कि 410 सीई से लेकर के 1066 AD तक, दैट इज 410 टू 1066 तक जो एज है, जो टाइम पीरियड है इंग्लिश हिस्ट्री का, उसे हम एंग्लो सैक्सन एज कहते हैं, बिकॉज उस टाइम वहां पर एंगल्स और सैक्सन्स रहते थे, ठीक है। A brief overview of Anglo-Saxon England. Yes, the socio-political history of England during Anglo-Saxon age. The Anglo-Saxon age of England spanned from 410 AD to 1066 AD. The Anglo-Saxon England was ruled by Angles, which were the major Germanic tribes. They ruled East, North, and Midland. Then it was also ruled by Saxons, who were originally from Denmark, that is the south of Denmark, and Jutes. Jutes ruled the Kent of England. जो आज Kent है, उस एरिया को कौन रूल करते थे? Jutes रूल करते थे. So the Anglo-Saxon England were ruled by these three tribes. और जो वहां के ओरिजिनल inhabitants थे, that is the Celts. केल्ट्स को बाद में क्या बुलाए जाने लगा? वेल्श बुलाए जाने लगा, WELSH, वेल्श। और वेल्श मतलब होता है फॉरेनर्स। सो सी द आयरनी, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे उस लैंड के, उन्हें एंग्लो सैक्सन एज में वेल्श यानी कि फॉरेनर्स बुलाए जाने लगा, और वो फिर भी अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने में लगे रहे। और आज का जो इंग्लैंड का वेल्स रीजन है, वहां हमें अभी भी ओरिजिनल केल्टिक लैंग्वेज देखने को मिलता है। इट इज स्टिल अलाइव बिकॉज वो उस छोटे से लैंड में, दैट इज वेल्स में, अपने हेरिटेज को प्रोटेक्ट करते रहे। The early sources such as ecclesiastical history of English people written by Saint Bede and the Anglo-Saxon chronicles accounts for the historical records of how Angles and Saxons actually created their kingdoms and ruled all over England. Okay, so by the 7th century, the concept of heptarchy, which actually refers to different kingdoms that were formed by Anglo-Saxons in England, came, and this heptarchy actually included 7 kingdoms, that is Northumbria, Mercia, Wessex, Sussex, Essex, East Anglia, and Kent. Okay, so these kingdoms were the major kingdoms of Anglo-Saxon England, and with the changing time, each kingdom rose into more powerful individuals. Okay, so this was how Anglo-Saxons took over and captured and ruled whole of England from 5th century to 11th century. Okay, now if we talk about Anglo-Saxon society, please note that Anglo-Saxon society was structured around kinship and royalty. The king were often chosen from the royal family. They enjoyed kinship, loyalty, and royal structure. Okay, also this period saw developments in art and culture as well as literature. The women in this age played a very intrinsic role in society. In fact, they were
referred as weavers of not only clothes but the weaver of the society. Okay. If we talk about the religion of Anglo-Saxon England, please note that in the beginning years, Anglo-Saxon England followed paganism. Okay, pagan थे, उनका religion क्या था? Pagan religion था. But around 597 AD, with the arrival of Saint Augustine, Christianity entered England. Okay, now the literature and art of England find the mixture and melding of both paganism and Christianity. Also, it finds the influence of Germanic culture and heritage. Please note that during that period, the oral tradition of transmission was followed. Means writing form का ज़्यादा influence नहीं था. जो literary works थे, they were mostly transferred and transmitted through oral form. Okay, oral tradition था, word of mouth के form में वो transfer होता था. Also, during Anglo-Saxon age, the people, the society was most lovers of poetries and riddles. But most of the Anglo-Saxon work जो हमें देखने को मिलेंगे वो poetry के form में ही है, long narrative poems के form में है, कुछ prose work भी देखने को मिलता है. ठीक है. Now, if we talk about Anglo-Saxon literature, the first record of Anglo-Saxon literature that we find is the Cadman's hymn. अब ये Cadman कौन थे? तो Cadman is considered as the father of Old English poetry. He is considered as the first poet of English language. Cadman बहुत सारे religious hymns लिखते थे and Saint Bede की ecclesiastical history में इन hymns का भी जिक्र है. तो first literary work जो हमें मिलता है वो है Cadman hymns, and the first major work that we find and the first complete, almost complete work that we find is the epic narrative Beowulf. Okay, Beowulf is a very important work of Old English. It's a long epic narrative. Beowulf is the longest epic narrative of English literature. It is considered as the first major work of English language and English literature. So please note that if we talk about the writer of Beowulf, it is anonymous. So the writer is unknown. Now, if we talk about the style of Beowulf, please note that it was written in 3,182 alliterative lines. So, alliterative verse is one of the major theme of Old English poetry. ये जो rhyming poetries की बात करते हैं ना, rhyming lines की बात करते हैं, ये काफी बाद में आया. Old English में या Anglo-Saxon age में जो narratives, जो poetries हमें देखने को मिलती हैं, वो mostly alliterative verse होता है. Alliteration का ज़्यादा use होता है वहाँ पे. Okay. Also, Beowulf consists of Germanic themes, Germanic culture, and it also finds the influence of Germanic heritage, that is the theme of loyalty and kingship. Now, if we talk about the plot of Beowulf, it deals with the story of a legend, a brave legend, a brave warrior, Beowulf, who was called by the king of Denmark, that is Hrothgar, in order to protect and save them from the monster Grendel. Okay. So डेनमार्क के किंग हॉटगार ने बुलाया किसको? बेओवुल्फ को, टू फाइट अगेंस्ट द मॉन्स्टर ग्रैंडल. नाउ बेओवुल्फ जब ग्रैंडल को मार देता है, उसके बाद ग्रैंडल की मदर भी बेओवुल्फ को चैलेंज करती है एंड एट द एंड उसकी मदर की भी डेथ हो जाती है. एंड फिर किसी और पोएट्री में आगे चलकर हमें पता चलता है कि बेओवुल्फ का भी डेथ हो जाता है किसी वॉर में. ओके, सो मेजर प्लॉट क्या है? इट्स अ प्लॉट ऑफ ब्रेवरी एंड बैटल बिटवीन गुड वर्सेस एविल. ओके, who was the good one? Beowulf was the good one who came to Denmark in order to protect the people, their citizen, from the monstrous and devil attack of Grendel. Okay.
एंग्लो सैक्सन एज में बियोवुल्फ के अलावा भी बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो कि कैडमन हिम्स है, बहुत ही मेजर वर्क है। रिलीजियस एंड बिब्लिकल थीम्स पे हमें बहुत सारे वर्क देखने को मिलते हैं। क्रिश्चियनिटी और पैगनिज्म का मिक्सचर देखने को मिलता है। Some major works are The Wanderer, The Seafarer, The Exodus, and The Dream of the Rood, a very important work of Anglo-Saxon age. प्लीज नोट दैट ये जितने ओल्ड इंग्लिश लिटरेरी वर्क हमें देखने को मिलते हैं वो एक्चुअली में मैन्युस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में प्रिजर्व किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओल्ड इंग्लिश टाइम में मोस्टली जो लिटरेरी वर्क्स थे वो ओरल ट्रेडिशन में, ओरल फॉर्म में ट्रांसमिट होते थे फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बट कुछ वर्क्स को मैनुअली अपने हाथ से लिख कर रखा गया एंड वही प्रिजर्व्ड रिकॉर्ड्स हैं जो आज भी हमारे पास हैं, जो बताता है कि ओल्ड इंग्लिश के टाइम में भी, दैट इज एंग्लो सैक्सन एज में भी कुछ लिटरेरी वर्क्स हुए थे। तो जो 4 मेजर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिसके थ्रू हमारे ओल्ड इंग्लिश के वर्क्स को प्रिजर्व करके रखा गया है, जिसके अंदर वो 4 मेजर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। द बेओवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट, as the name suggests, consists of the major epic, the Beowulf, the Exeter book, which consists of works like the Seafarer and the Wanderer, the Junius manuscript, and the Vercelli manuscript, that is the Vercelli book. The Vercelli book consists of a very major work, that is the Dream of the Rood. Okay, so these 4 manuscripts आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओल्ड इंग्लिश के वर्क को किस फॉर्म में रिकॉर्ड करके रखा गया, तो उसे रिकॉर्ड करके रखा गया 4 मेजर मैन्युस्क्रिप्ट्स में। और वो 4 मेजर मैन्युस्क्रिप्ट्स कौन कौन से हैं? द बेओवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट, जिसमें द मेजर वर्क है बेओवुल्फ। द सेकेंड वन इज द एक्स्टर मैन्युस्क्रिप्ट, द वर्सेली बुक एंड द जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट। ओके, जो एक्स्टर मैन्युस्क्रिप्ट है, जो एक्स्टर बुक है, उसमें हमें सीफेरर और वॉन्डरर जैसे बुक वर्क देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें द वर्सेली मैन्युस्क्रिप्ट की, तो उसमें हमें द ड्रीम ऑफ रूड देखने को मिलेगा। ओके, अगर जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट की बात करें तो वहां हमें एक्सोडस जैसा वर्क देखने को मिलता है। ओके, नाउ अगर हम ओल्ड इंग्लिश के लिटरेरी फिगर्स की बात करें तो हमें 3 मेजर नाम देखने को मिलता है, कैडमन, साइनवुल्फ एंड सेंट बीड। इनफैक्ट किंग एल्फ्रेड का भी बहुत बड़ा योगदान है ओल्ड इंग्लिश को प्रमोट करने में एंड ओल्ड इंग्लिश लिटरेरी वर्क में। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कैडमन की। कैडमन इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इंग्लिश पोएट एज वेल एज ही इज ऑल्सो नोन एज द ओल्ड इंग्लिश मिल्टन। क्यों भाई उन्हें मिल्टन का कह के क्यों रेफर किया जाता है? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं मिल्टन ज्यादातर रिलीजियस वर्क लिखते थे। उसी तरह ओल्ड इंग्लिश पीरियड में कैडमन एक ऐसे फिगर थे जिन्होंने बहुत सारे रिलीजियस हिम्स लिखे थे। उनकी मोस्ट ऑफ द वर्क बिब्लिकल थीम्स पे, क्रिश्चियनिटी पे बेस्ड होती थी। ओके, सो कैडमन इज वन सच एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट English literary figure of Old English age. Then comes Cynewulf. Cynewulf is also considered as a major author, as a major poet of Old English period. And next is Saint Bede. Saint Bede का बहुत बड़ा योगदान है हमारे आज जो भी हम इंग्लिश लिटरेचर के बारे में जानते हैं, इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं, उनके ज्यादातर सोर्स हमें सेंट बीड की इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल से ही देखने को मिलता है। ओके, सो सेंट बीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड। एंड ऑल्सो किंग एल्फ्रेड की अगर बात करें तो किंग एल्फ्रेड is considered as a figure that promoted English language to a very great extent. Okay, he increased the use of English language in monasteries and everywhere. Okay, so Saint Bede एंड किंग एल्फ्रेड के अलावा जो 2 मेजर पोएट हमें देखने को मिलते हैं वो कौन है? कैडमन एंड साइनवुल्फ। ओके, एंड मोस्ट ऑफ दी वर्क जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड का है उसके राइटर्स ना एनोनिमस ही हैं, अननोन ही हैं, बट कैडमन हिम,
कि अगर राइटर की बात करें तो वो कैडमन है, एंड साइन वुल्फ के भी कुछ वर्क हमें देखने को मिलेंगे. So I hope you are clear with Old English poets and authors. You are clear with the 4 major manuscripts of Old English literary works. You are clear with how actually Old English period began, what actually Old English literature referred to, what was the socio-political background of England during Old English age, that is Anglo-Saxon age. So this is all about Old English period of England and Old English literature. Now I'll next come up with a detailed video on the first epic narrative of English literature, that is Beowulf. Okay, I hope आज की वीडियो में मैंने जितनी भी बातें की हैं वो आपको क्लियर है. If this video helped you, please don't forget to like the video, share it with your friends and subscribe to my channel. Thank you.